लूका का दूसरा अध्याय। क्रिसमस का समय है। लूका का दूसरा अध्याय। बस प्रार्थना करते पहले। प्रभु यीशु धन्यवाद है आज की शाम के लिए और एक अद्भुत समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह के ऑफिस में जो बहुत से लोग आए हैं, पास्टर अब्दुल को आप इनवाइटिंग करना जब वो प्रीच करें। पवित्र आत्मा लोगों को उस संदेश को समझने में मदद करना प्रभु यीशु, ताकि लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि आप एकमात्र जीवन देने वाले हो और आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। धन्यवाद देते आज की शाम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की सर्विस को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, लूका का दूसरा अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति। उसमें लिखा कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए और उन्हें वहाँ रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपनी पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े से लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में कोई जगह न थी। ओके, और इसे मैंने हिंदी से प्रीच किया था, सो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ ये संडे पे। सो यहाँ पर एक्चुअली यीशु मसीह की मरियम और यूसुफ के शादी नहीं हुई थी। यहाँ पर लिखा वो मंगेतर बोल रहे हैं, उसकी मंगेतर थी। दोनों बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैच्योर थे और उनके इसलिए उनके पेरेंट्स और फैमिली वालों ने ये शादी तय किया था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब क्योंकि दोनों हाईली स्पिरिचुअल इसलिए थे बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट रीजन, मरियम को परमेश्वर ने चुना यीशु मसीह की माँ बनने के लिए। सो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कितना स्पिरिचुअल होगी, और साथ ही साथ हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर यूसुफ उसके साथ शादी कर रहा है मतलब वो भी कितना स्पिरिचुअल हो गया, राइट। सो ये दोनों जब एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे तो इसका बेस्ट रीजन ये था कि ये स्पिरिचुअल एक दूसरे के साथ बहुत स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थे ये दोनों। लेकिन जब यूसुफ को जब ये खबर मिली कि उसकी पत्नी होने वाली पत्नी पहले से प्रेग्नेंट है, यूसुफ को बहुत बुरा लगा और अंदर ही अंदर यूसुफ ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं इसे छोड़ दूं ना, क्योंकि कई सारे रॉन्ग थॉट्स आने लगे। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझता था, ये तो अलग शादी से पहले प्रेग्नेंट निकली और अभी तक हमारे बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, और उसके मन में बहुत सारे रॉन्ग थॉट्स आने लगे। और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे समझाया कि यूसुफ ये जो लड़की है और उसके पेट में जो बच्चा है वो कोई और बच्चा नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जिसके बारे में पुराने नियम में कहा गया था। और यूसुफ सडनली खुश हो गया, राइट। वो मतलब लाइक ये वो है जिसके लिए हमने लाइक कंटिन्यू बाइबल में पढ़ते हैं, जो उद्धार करता आने वाला है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो पहली बार परमेश्वर ने वादा किया स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा, वो ये वही बीज है। सडनली उसका माइंड चेंज हो गया, वो बहुत खुश हो गया और फिर उसने कहा कि लेस मैं इसके साथ दूंगा। और वो अपनी बीवी को पता है लाइक घर में अगर जनगणना होता है ना, लोगों की गिनती होती है, क्या बोलते हैं जनगणना को? हाँ, तो जब यहाँ होता तो लोग हमारे घर पे आते, राइट। बट इजराइल में ऐसा रूल नहीं था। इजराइल में आपको वहां जाके बेथलेहम में जाके अपना नाम रजिस्टर में लिख कर आना पड़ता था। और जब नाम लिखाने दोनों गए तो उसी दिन सडनली इसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया और उसको कहीं रूम नहीं मिला तो गाय के कोठे में उसे साइड पे रख दिया। ओके, सो ये लाइक गॉड का परफेक्ट प्लान था। रीजन है कि परमेश्वर ने पहले कहा था बेथलेहम में उसका जन्म होगा और वो रहता नासरी में था। सो सडनली गॉड ने उसे सेम टाइम पे उसे वहां पहुंचाया और उसका वहां पे जन्म हो गया। ओके, जब उसका वहां पे जन्म होने के बाद 10वीं पंक्ति में
तब स्वर्गदूत ने उसे कहा मत डरो। कई सारे चरवाहे वहां बैठे थे, उनसे स्वर्गदूत मिला और उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और ये यीशु मसीह है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम उसे बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। ओके, तब क्या है, ओके, यहाँ पर ये एक सिंबल था उनके लिए कि गाय के गोठे में जा, स्वर्गदूत बोल रहे चरवा को, तुम बेतलेहम में जाओगे और तुम्हारे लिए यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, और तुम्हारे तुम कैसे पहचानोगे उसे? पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो गाय के गोठे में होगा। ओके, इमेजिन कोई भी इंसान लाइक बच्चा पहली बार अगर पैदा होगा तो गाय के गोठे में नहीं होगा, और उस समय में पहला बच्चा था जो गाय के गोठे में था, तो बड़ा आसान था इनको समझने के पहचानने के लिए कि ये यीशु मसीह है। फिर सारे के सारे लोग गए और वहां पर हो गए, जैसे उसने भविष्यवाणी किया, मुझे ये सीन बहुत पसंद है क्योंकि बाइबल भी एक ही जगह पर है। जैसे स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की और वो स्वर्ग में उठा लिया गया, और जैसे स्वर्ग में उठा लिया गया, सडनली एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए परमेश्वर ने इन चरवाहों को पूरा स्वर्गदूत का दल दिखा दिया। राइट, जितने भी स्वर्गदूत थे, एक बहुत बड़ा झुंड था स्वर्गदूत का, एक या दो स्वर्गदूत नहीं थे, बहुत सारे झुंड दिखा दिया, और सारे के सारे आकाश से चिल्ला रहे और उनको बोल रहे कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर उन पर शांति हो जिस पर परमेश्वर दया करता है। राइट, और ये एक सॉन्ग की तरह वो लोग गा रहे थे, स्टेटमेंट की तरह, और सडनली बादल आया और सारे स्वर्गदूत गायब हो गए, उनको कुछ नहीं दिखा दे रहा। तो ये एक्साइटमेंट होकर वहां पे गए, और वहां पे जाने के बाद मरियम एकदम चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। ओके, और यूसुफ चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है। होता है ना, जब पहली बार जब हॉस्पिटल में कोई पैदा होता है तो रिलेटिव्स आते हैं घर देखने के लिए। राइट, होता है, राइट, कई सारे रिलेटिव्स आते हैं देखने के लिए बच्चे को, और यीशु मसीह को देखने के लिए कई सारे चरवाहे आए हैं। ओके, और एक्चुअली ना चरवाहा ने भी कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह ने भी, यीशु मसीह के माता पिता भी कुछ नहीं बोल रहे, और बीच में यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर जस्ट सुला दिया है, और उसके चारों ओर राउंड के सारे चरवाहे यीशु मसीह को देख रहे हैं, और ये सोच रहे कि ओके, ये हमारा तोहफा है। राइट, ये गिफ्ट जो परमेश्वर ने जो कई सालों से हमें वादा दिया था, ये गिफ्ट आज हमारे सामने है। और उस यीशु मसीह को सामने देखा, मैं इमेजिन कर रहा था, मरियम ने जब पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़ी भी तो वो कहेगी मेरा गिफ्ट। राइट, और जब यूसुफ ने उसे हाथ में पकड़ा, वो बोल रहे हैं मेरा गिफ्ट। राइट, चरवाहे जब वहां पे आके खड़े हैं और वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा गिफ्ट। राइट, परमेश्वर की ओर से ये हमारा गिफ्ट है। हर इंसान इस यीशु मसीह का जन्म को ऐसा बोलते हैं, इंडिविजुअली हम बोल सकते हैं कि ये मेरा है। राइट, क्योंकि मेरे लिए आया और मेरे लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, मेरे लिए मरने वाला है, मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, और हर इंसान बोल सकता है ये एक गिफ्ट है जो मेरे लिए है। इवन आज की जनरेशन में हम ये वर्ड बोल सकते हैं, हमारे जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने एक सरप्राइज गिफ्ट, एक बेस्ट गिफ्ट हमारे लिए भेजा था, और वो यीशु मसीह था। राइट, इस दुनिया में कई सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों के लिए एक ही गिफ्ट यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा, और वो खुद यीशु मसीह था। इवन और बाइबल एक सच्ची किताब है। राइट, हमको पता है कि शैतान ने बहुत कोशिश की ऐसे बदलने का, लेकिन नहीं बदल पाया। दुष्टात्मा बदलने की कोशिश करते नहीं बदल पाए। कई सारे लोगों ने भी इसे बदलने की कोशिश किया, वो भी नहीं बदल पाए। कई सारे लोग, लेकिन बाइबल एक किताब है जिसने सबको बदल दिया है। राइट, कई सारे नेशंस को बदल दिया, कई सारे स्टेट को बदल दिया, कई सारे लोगों को बदल दिया है, कई सारे लोगों के हार्ट को चेंज कर दिया है। लेकिन कई सारे लोग ने कोशिश किया इसे बदलने का, लेकिन इसे नहीं बदल पाए। राइट, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एज ए क्रिश्चियन, इस बाइबल, ये पूरी बाइबल अगर आपको बाहर भी हो, इस बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की घटना को निकाल दो, उसके बाद आपको बाइबल में क्या मिलेगा? राइट, क्या दिखेगा आपको? कहाँ उद्धार है? ओके, कौन सा आपका किस बात पर आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे? उसके बाद किस बात पर आप सोल विनिंग करने के लिए जाओगे? भले आज क्रिसमस में हम लोग कई सारे अलग अलग जगह पे सोल विनिंग करने जाते हैं, आउटरीच करते हैं। अगर बाइबल में यीशु मसीह का जन्म ही नहीं होता तो हमारे पास उद्धार पाने का या अनंत जीवन पाने का आशा क्या होता? कोई क्या रास्ता होता हमारे पास? थैंक गॉड कि इस पूरी बाइबल मेरे लिए, अगर यीशु मसीह के जन्म के बारे में इसे हटा दो, यीशु मसीह की कहानी बाइबल से हटा दिया जाएगा, तो ये बाइबल सिर्फ एक हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। जिसको पसंद है वो पढ़ेगा, जिसको पसंद है वो नहीं पढ़ेगा, किसी का लाइफ चेंज नहीं होगा। पूरी लाइफ चेंज होने का रीजन एक है, बीच में यीशु मसीह का जन्म के बारे में है।
राइट। कई सारे लोग उससे फॉलो कर रहे हैं, कई सारे लोग उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे लोग उसके लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और तब जाके ऐसा लगता है। और इस बाइबल में हमारे लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट वो है कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम लोग जानते हैं, राइट। इसीलिए आज हम यीशु मसीह के बारे में हम लोग विश्वास करते हैं, राइट। यीशु मसीह एक ऐसा गिफ्ट है, राइट। लाइक मैं इमेजिन करता हूँ कभी कभी, ओके। सो ये गिफ्ट मेरे लिए ऐसा था जैसे कि ओके मेरा गिफ्ट मेरे सामने आता है और मुझे कहता है ओके मैं तेरा हूँ, जो कुछ भी मेरा है और वो सब तेरे हैं, तेरे सारे पाप मैं क्षमा कर देता हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तूने चाहे कोई भी गलती की हो, कोई भी अडल्ट्री हो, कोई भी बड़े से चोरी हो, मर्डर हो, या झूठ बोला हो, या घमंड किया हो, या कोई इस प्रकार का गलती तूने क्यों ना किया हो, वो सब अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तेरे सारे पाप को मैं क्षमा करूंगा, मैं तुझे अपनी धार्मिकता दूंगा, मैं तुझे प्योर बनाऊंगा, उतना पवित्र जितना मैं पवित्र हूँ। तू परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। तूने जो संबंध तोड़ खोया था, अब वो तेरा संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होगा। पहले आदम और हवा के बीच एक संबंध था, अब मेरे और परमेश्वर के बीच जो संबंध है वैसा संबंध तुम्हारा और परमेश्वर के बीच होगा। मैं तुम्हें परमेश्वर के साथ मिलाऊंगा, कोई तुम्हें तुम्हारे पाप में पहचानेगा नहीं, तुम्हारी पहचान को मैं बदल दूंगा, राइट। और ये गिफ्ट आके मुझे ऐसे बोल रहा है तेरे साथ, मैं बोलता हूँ कैसे हो सकता है, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। वो बोलता नहीं, तेरे सारे गुनाह के बदले मैं मर चुका हूँ, राइट। मैं तेरा बेस्ट तोहफा हूँ। और लाइफ में एक ऐसा तोहफा आया जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, राइट। और हर इंसान पता है कई सारे हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अभी तक इस गिफ्ट को अपनाया नहीं है, राइट। और एक दिन हम लोग सोचेंगे जब स्वर्ग में रहेंगे, भले ही हम लोग रिवॉर्ड्स लेंगे या वर्शिप करेंगे, पर एक मोमेंट हमारे अंदर ये रहेगा, थैंक गॉड मैं उस गिफ्ट को मैंने एक्सेप्ट किया था, राइट। और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मे बी नर्क में जाएंगे या मे बी लाइफ टाइम रोएंगे, ओके। पर उनको हमेशा एक ही अफसोस होगा, उस गिफ्ट को मैं क्यों नहीं अपनाया जो मेरे लिए दिया गया था, राइट। सो दूसरी चीज, गिफ्ट जब आपको सरप्राइज मिलता है तो हमें पता एक खुशी मिलती है, राइट। एक जॉय मोमेंट अपने आप आ जाता है। मैं याद कर रहा था मेरे लाइफ में जब गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था, एक पहली बार जब सरप्राइज गिफ्ट मुझे कभी याद है, सीरियसली मुझे याद है, मुझे फर्स्ट टाइम जो गिफ्ट मुझे मिला था वो याद है, वो ये करुणा शरण में हम लोग का क्रिसमस सर्विस हो रहा था वसई में, और वो मैदान में जहाँ पे हम लोग खेलते थे। अभी का जो करुणा शरण है वो नहीं, तो पहले जब बिल्डिंग्स इधर बनते थे और हम लोग एक स्पॉट था हम लोग का खेलने का, हम लोग वहाँ पे खेलते थे। सो एक बार क्रिसमस सर्विस था और हम लोग रात को हम लोग ने वहाँ पे वर्शिप किए, फिर मैसेज हुआ, फिर प्रोग्राम हुआ। सब खत्म होने के बाद वहाँ के मेन आदमी ने अनाउंस किया, सुनो, और कोने में एक क्रिसमस का बड़ा ट्री लगाया हुआ था, और उस क्रिसमस के बाजू में करीब बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए थे। आई थिंक तभी हम लोग पता है कितने लोग, हार्डली 35-40 बच्चे होंगे करुणा शरण में, ज्यादा लोग नहीं थे, और कई सारे गिफ्ट्स उसमें पड़े थे, और अनाउंस किया कि तुम्हारे गिफ्ट्स उसके अंदर है, जाके ले लो। तो हम लोग 35-40 सब भागे अपना, राइट, एक दूसरे का ले रहे, तेरा नाम आया हो, वो उसका नाम आ रहा, जब मेरा नाम मिला, राइट, मैंने खुशी से एक्साइटमेंट से ओपन किया, और जब ओपन किया तो मेरा फेवरेट कलर का बेस्ट टी शर्ट मुझे मिला, येलो कलर का, और मैं ओपन किया, राइट। और मैंने ये टीचर्स लोग का ये प्लान था, मैं आपको बता देता हूँ, ओके। इन्होंने प्लान करके हर इंसान को जो पसंद है और जो उनको जैसा चीज उनको बेस्ट है वही उन्होंने पहला पहचान क्या बोलते हैं फाइंड आउट किया, और उसके बाद सेम गिफ्ट लाके उनको दिया, राइट। और मैं बहुत खुश हुआ, क्रिसमस गिफ्ट, येलो टी शर्ट, फुल हैंड वाला टी शर्ट था, और मैं बहुत वो पहला सरप्राइज था मेरे लिए। मेरा कहने का मतलब एक गिफ्ट आता है और गिफ्ट में एक सरप्राइज होता है, और जब खोलते तो एक खुशी होती है, राइट। मैं आज ये मैसेज को जब सोच रहा था तब मैंने सोचा मेरा फर्स्ट गिफ्ट कौन सा था, और जब याद कर रहा था तो तब जाके याद है, मैं भी कम्प्लीटली भूल गया था। बट यीशु मसीह का ये जो गिफ्ट है जब याद आता है तब ऐसा लगता है कि ये फ्रेश है, राइट, अभी भी नया है ना। जैसे कि कोई मुझे ये गिफ्ट दे नहीं सकता, और कोई किसी से मैं मांग भी नहीं सकता, कोई नहीं है इस दुनिया में परफेक्ट जो मुझे ये गिफ्ट दे। और मेरे लिए तो ये एक बेस्ट तोहफा था जो यीशु मसीह की ओर से मुझे मिला था। हम लोग गिफ्ट के साथ एक आता वो जॉय होता है, राइट। आप जैसे यीशु मसीह को विश्वास करोगे आपके अंदर एक जॉय आएगा,
थैंक गॉड, लाइक अब मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, अब मैं लाइक फेलोशिप कर सकता हूँ, अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, अब लाइक स्वर्ग अब मेरा भी घर है जैसे यीशु मसीह का घर है, और मैं खुश हो सकता हूँ, मैं वर्शिप कर सकता हूँ, मैं सोल विनिंग कर सकता हूँ, लाइक मैं स्पिरिचुअल लाइक गॉडली फेलोशिप कर सकता हूँ, इवन मैं परमेश्वर के साथ बने रह सकता हूँ, या मैं गॉड के साथ एक इंटीमेसी रिलेशनशिप रख सकता हूँ, अब मैं रख सकता हूँ बिकॉज ऑफ वो, क्योंकि वो गिफ्ट की वजह से, वरना इनमें से कोई भी चीज मैं नहीं कर सकता था। और ये बहुत बड़ा जॉय है हमारे लिए, राइट, कि मेरी पहचान और मेरी पहचान नहीं है, कोई मुझे मेरे कल मैंने क्या किया उसमें कोई मुझे नहीं जान सकता। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्या किया, लोग उसमें मुझे फ्रेश नहीं जानते। ये कमन एक बात बताए, आपने कल क्या गलती करोगे ये बात जुनी है, और 2000 साल पहले जो यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या ये अभी भी नहीं है, राइट, वो अभी भी लाइक ऐसे लगता है कि वो फ्रेश है, मैंने कल क्या किया वो पास्ट हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने जो 2000 साल पहले जो मेरे लिए अपनी लहू जो जन्म लिया और जो मारा गया, वो स्टोरी आज भी फ्रेश है हमारे लिए। सो एक चीज वो आता है कि हमारे लाइफ में एक फ्रेशनेस लेके आता है, राइट, एक जॉय लेके आता है। तो तीसरी चीज पता है, मैं मेडिटेट कर रहा था, गोलियत और दाऊद की फर्स्ट फाइट हमको पता है, राइट, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16-17 में, राइट, पहला लाइक क्या हो रहा था, ओके, पुराने जमाने में एक रूल थे, तो पूरे देश के सारे सैनिक एक साथ मत लड़ो उस समय में, ओके, इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, एक काम करो तुम्हारे यहाँ से एक आएगा और हमारे यहाँ से एक आएगा, और एक जो आदमी जीता वो देश जीत गया, ओके, ये रूल था। सो जब गोलियत सबको 40 दिन से लड़का रहा था, चैलेंज दे रहा था, कोई है तो आओ, कोई है तो आओ, सारे के सारे पता मोमेंट कैसा हो रहा था, सारे के सारे मैदान में ऐसे खड़े होते थे, और जब गोलियत सामने आता था वही सारे के सारे लोग पीछे भाग जाते थे, क्योंकि हमें से कोई नहीं था। पता क्रूस की फाइट लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी, हर कोई जब उसके बारे में सोचता था सब पीछे जाते थे, कोई नहीं था जो सामने आके कहे कि मैं लड़ सकता हूँ, राइट, एक भी नहीं था, कोई उसके योग्य नहीं था जो सिवाय यीशु मसीह के। और जब यीशु मसीह आया, उसने अकेले ने क्रूस पर गया और अकेले ने वो जीत हासिल किया, और उसके बाद तुरंत हम सब जीत गए, राइट, हमारे ओर से यीशु मसीह गया और हम जीत गया। अगर कोई कहे तुझे पता है तू कितना बुरा इंसान है, उसको बोलो मैं जीत चुका हूँ, मैं मेरी बुराई में भी जीत चुका हूँ, राइट, मैं मेरे पास्ट में मैं जीत चुका हूँ, मैं मेरे ओल्ड सिन नेचर में जीत चुका हूँ, मैं मेरी जो पुरानी पहचान थी, मेरे जो पुराने बुरे आदतें थे, मेरी जो गलतियां थी, उनमें मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे वजह से वो क्रूस पर लड़ाई लड़ी है, और उसकी जन्म और उसकी मौत मैं वो रीजन, राइट। अगर कोई पूछता है लाइक सिंपल जवाब, सवाल का जवाब अगर कोई पूछता है यीशु मसीह क्यों आया, मेरे लिए आया और मेरे लिए मारेगा, राइट, मैं वो रीजन, ओके। अगर मैं आज आउटरीच कर रहा हूँ उसका कारण ये है क्योंकि यीशु मसीह, तुम भी एक रीजन हो, राइट, हम वो रीजन है जिसके लिए एक गिफ्ट हमारे लिए आया और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। और ये बेस्ट गिफ्ट जो इस दुनिया में कोई हमें दे नहीं सकता और ना कोई हमसे ले सकता है, ऐसा गिफ्ट यीशु मसीह था, राइट। ओके, लास्ट में लास्ट मुझे एक चीज़ कहना था। ये संडे हम लोग हमारा प्रेज मैच, अपना प्रेज मैच बहुत अच्छा था, राइट। मैं प्रेज मैच के बारे में बात करना चाह रहा था। एक्चुअली ये संडे एक नया लड़का आया हिंदी चर्च में, और बाद में वो प्रेज मैच से लड़का है, वो आउटर से आया। वो लड़का उससे पहले एक स्टोरी ऐसी है, एक लड़का आया नया और वो ये चेयर में बैठा था, सिर्फ यही जगह था उसका, ओके। और दूसरा लड़का आया जो हमारे चर्च में कभी कभी आता है, और दीपक नाम का लड़का है, वो आया, वो उसके बाजू में बैठा। ये लड़के ने इसको कभी नहीं पहचानता, लेकिन ये लड़का उसको अच्छे से जानता है। और जब सर्विस खत्म हुई तो ये दीपक ने आके मुझे कहा, पास्टर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लड़का आया ना, इसके एरिया और इसके ग्रुप में से, इसके फैमिली में से, मैं आपको बताऊँ कोई भी इंसान कभी चर्च नहीं आएगा। ये इतने स्ट्रॉन्ग हिंदू है, हिंदू में से इतने स्ट्रॉन्ग है ये लोग। मैं आपको बताऊं, ये लोग नफरत करते हैं बाकी और धर्मों से और अपने धर्मों से बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता नहीं ये लड़का कैसे आया, आप इससे एक बार बात करो। और जब सर्विस के बाद मैं जब उस लड़के से बात करने गया, मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुम कैसे चर्च में आए, उसने अपने बारे में मुझे बताया। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी स्टोरी उससे फर्स्ट टाइम एक बात बताऊं, मेरा भाई है एक छोटा, और वो गूंगा और बहरा है, वो बोल नहीं सकता और वो सुन भी नहीं सकता कई सालों से। और उसको 20 दिनों से उसको कुछ बीमारी थी, वो बीमारी क्या हमको समझ में नहीं आ रहा था। लाइक कमजोरी में सोता रहता था, कंटिन्यूसली बुखार आता जाता, बुखार कंटिन्यूसली रहता था।
हमने बहुत जगह उसको चेक किया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। सो वो लड़का बार बार लाइक चर्च का इशारा कर रहा था अपनी मम्मी को, राइट। और उसकी मम्मी ने उससे स्टेटमेंट कहा ये लड़का पागल हो गया है, पता नहीं है कि अपने धर्म के छोड़कर, अपने इससे छोड़कर ये चर्च के बारे में क्यों बता रहे हैं। उसको किसी ने चर्च के बारे, उसके फैमिली में किसी ने उसे चर्च के बारे में पहले कभी नहीं बोला, किसी ने उसे चर्च के बारे में सुनाया नहीं, लेकिन वो लड़का बार बार चर्च के इशारा कर रहा था, चर्च के बारे में इशारा कर रहा था, चर्च के बारे में इशारा कर रहा था। एक दिन उसकी माँ ने कहा एक बार इसको लेके जाते हैं, और वो माँ उसकी कोई चर्च में लेके गए, और चर्च जाने के बाद उसका लड़के का जो बुखार था उस दिन शाम को एकदम ठीक हो गया और वो लड़का खेलने लगा। सो उसकी मम्मी और फैमिली में जो बात था ना, सो वो बोलते कुछ तो है ना, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ तो है जिसके वजह से आज मेरा बेटा ठीक हुआ है। मैंने सब किया, ये इसको कभी चर्च के बारे में नहीं पता, इसके बाद चर्च का क्या होता है इसको कुछ नहीं पता, लेकिन ये हमें चर्च के बारे में क्यों बार बार इशारा कर रहा है। ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन बार बार इशारा करता है चर्च के बारे, चर्च के पास लेके जाने के लिए। और उस दिन वो ठीक होने के बाद जब उसको ऐसा लगा, उसका बड़ा भाई बोलता है अब मैं चर्च जाऊंगा। और उसी दिन वो नॉर्मली जब वो चर्च ढूंढ रहा था और प्रेज मार्च यहाँ से प्रेज मार्च वहां से मिला, और उसे बोला क्रिसमस के बारे में और क्रिसमस के बारे में उसे पता चला। वो लड़का आधा प्रेज मार्च तक वो साथ में आ रहा था और लोगों के साथ जाके रिसीव कर रहा था, सुन रहा था, एंजॉय कर रहा था। और एंजॉय करने के बाद जब वो शाम को मेरे साथ बैठा था तो मुझे बोलता है मुझे आपके धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है मैं यीशु मसीह में मानता हूँ, मैं सिर्फ यीशु मसीह को मानता हूँ, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता बस मुझे। और बार बार बोल रहा है मेरा भाई सचमुच बहरा है और गूंगा है और बोल नहीं सकता, लेकिन क्यों चर्च की ओर दिखा रहा था हमें नहीं पता। लेकिन आज मैं उसकी वजह से बोलता हूँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। और फिर दूसरा स्टेटमेंट पता क्या होता है, देखो यीशु मसीह का जन्मदिन भी सामने नजदीक ही आ रहा है। So, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं, बट वो था जिसको वो ढूंढ रहा था। पता नहीं उसके फैमिली में जो जिनके आँख थे, जिनके कान थे, जो बोल सकते थे, कभी उन्होंने यीशु मसीह के बारे में नेगेटिव बोला, लेकिन जो जिनके पास था नहीं उसके अंदर पता नहीं कहाँ से ये इच्छा है कि मुझे चर्च जाना है। उसका कोई बहुत दूर का रिलेटिव ने उसे एक बार ये कहा कि दूर का कोई रिलेटिव था, उसके पास बाइबल था, उसने जबरदस्ती उसका बाइबल छीना, राइट। बोलते मुझे चाहिए, इशारा भी करते रहे ये चाहिए, ऐसा करके वो बार बार वो बोल रहा था। और उसने बाइबल लिया और बोलते शाम को उसको पढ़ने भी नहीं आता, लिखने भी नहीं आता, खोल के सिर्फ बैठा रहता, उसको कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या है, बट पता नहीं। बट उस फैमिली वो लड़के ने मुझे बोला कि मैंने बोला कि हमारा ये संडे इन्विटेशन संडे है, क्रिसमस सर्विस है और आप आना। बोलते मेरी पूरी फैमिली आने वाली है। बट आई यीशु वो तोहफा उसको मिला, राइट। और उस दिन उसके भाई ने जिस तरह से उसको एक दिशा दिखाया और उस तोहफे के और उसने जब वो तोहफा खोला उसके अंदर बहुत जॉय था। अब मैं उसका एक्चुअली एक्सप्रेशन बता नहीं पा रहा, जिस तरह से वो बोल रहा था कि मैं मानता हूँ, जिस तरह से वो बोल रहा था जोश में, उसका वो अलग था, बट पता नहीं। बट वो तोहफा जो 2000 साल पहले था वो आज भी फ्रेश है। जो इंसान उसके बारे में सुनता है और रिसीव करता है उसको लगता है मुझे नया गिफ्ट मिला, राइट, और नया जीवन के साथ। आमीन। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, धन्यवाद देते हैं सर्विस के लिए। पास्टर जॉन के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। That was great testimony. He pointed, deaf and dumb, and he knows. He points, and that's amazing. Praise the Lord. I love the verse. It says, "With stammering lips I'll speak to this people." Isaiah says, "The stammering lips," meaning that can't express it. This person literally couldn't express it, but he knows in his heart that's where it is. And even he opens the Bible. Can't read it, but he knows it's in here. And God will show us. You know, that's he pointed. He's the one who pointed. And that's why just short message, just two main points really. From Isaiah 9, we heard it there. Unto us a child is born. Isaiah 9, chapter 2, verse 6 and 7.
Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be on his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it, to establish it with judgment and justice from henceforth and forever. The zeal of the Lord of hosts will perform it. And a verse in Hebrews, it says that he is not ashamed to call them brethren. He's not, Jesus, speaking of Jesus, that he's not ashamed to call us brethren. He's not ashamed to call us brothers. So, it says, unto us a child is born, unto us a son is given. So, you can take it different ways, but child often is a picture of his humanity. A child is born with humanity, and a son is given. This is the deity of Christ, and on him shall the government will rest on his shoulders. A child is born and a son is given, and his name shall be Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, the Everlasting Father. And it's just this part to be able to see, like sometimes what God does is he shows all we can see is the child that's born, both in Bethlehem but also through the life. All we see is the humanity of Christ, and only that part of him. And we have to see the Son that is given, that on him the government shall rest, and of the increase of his government there shall be no end. The increase of it, that it will increase from Jerusalem to the whole world, and there will be no end to it. The increase of his government and peace, that the peace will come, and there will be no end to the increase of the peace. The peace just grows deeper and deeper, and it is forever, goes on forever. But unto us a child is born, a son is given. And when he's born, we can't see the sonship, or the sonship of Christ. We can't see that here is the one that the government shall rest on his shoulders. So it says, Philippians 2, he made himself of no reputation. He took on him the form of a servant and became obedient to death. Isaiah says there's no, Isaiah they call the fifth gospel. There was no form of comeliness in it that we should be drawn to him. Meaning that there was no outward power in him. There was no outward display of a king who is going to rule Jerusalem and Israel, but also who is going to have an increase. There will be no end. To rule not only Jerusalem, but he will rule the world, and he will rule forever and ever. And there's no form of outward display that would draw us to him at all, either worldly or religious. Neither of it. Job says, he stripped me of my glory, Job says. And the glory of a king is his robes, it's his palace, it's his army, it's his gold, and it's his nation. And all of that stripped. Jesus, of course, is the King of Jews. That's all stripped for him. And Job says he stripped me of my glory. But here Christ comes, and there's no glory. There's no outward display at all that we should see him. All there is a child is born, nothing else. But there is behind him the Son. And to be able to see it, so it says that his name will be Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace. And to be able to see, and this, I know we know these things, but to be able to see past, and if we see past the child that is born to the Son given, then there's a wonder. Then we say his name is Wonderful. His name is, and if we can see it, and then Mighty God and Prince of Peace and Everlasting Father. And then we know the increase of his government and peace will be no end. But somehow we have to see the wonder. And if we've been thinking of this a little bit lately, listening to Rabbi Zacharias, and he was talking on wonder. And if we lose the sense of wonder in life, then life loses its sparkle. But also, we have to see it. And if we see the wonder, we see the deity of Christ in it. When it's hidden, and it was hidden 2,000 years ago, and it's hidden today as well. It doesn't get any different. And also, he says that is the disciple greater than his master? That what way he lived, where he had to live in a hidden humanity, where he had the glory, he had the deity, he had the calling, but it stayed hidden, and God didn't let it show itself except for those who could see by faith. So, in the Gospels, we
we read it there. There were 6 groups of people, which we know: Joseph, simple person, carpenter; Mary, also British person, Pastor Zachary said, wonderfully about it. And then Simeon, who was the older man in the temple who waited for it. Anna, who was the prophetess in her 80s. And then there was the shepherds, and then the wise men, who were Gentiles, who really were just came into it. It was only that 6 groups of people who could see. They were the only ones who could see the sonship, who could see the Son of God. And he was hidden from the rest of it. Same in the resurrection. In the resurrection, he didn't show himself to many people. He showed himself to maybe 12 times, or someone might know the number, maybe 12 times to people. And then to 500 people at one time. Sizable number, but not huge. He didn't go to the multitudes. He often preached to 5,000. There were thousands in Jerusalem. He could have gone. Also at the resurrection, when he made his appearances, what's interesting is who he made his appearances to, but also who he didn't make his appearances to. He didn't appear to Pilate, and he didn't appear to Herod, and he didn't appear to Caiaphas, the high priest. And as someone shared one time, he could have done it. Pontius Pilate walked right into the palace, he walked through the house with the disciples in the upper room. He could have just walked in and said, "Remember me?" He could have walked into Herod and stood before him. He could have walked to Caiaphas and to the whole Sanhedrin who had. But he didn't. He hid himself, and he deliberately hid himself. When he is in front of Pilate, he says to him, as the child, in his humanity, Pilate says to him, "Don't you know who I am, that I have power to crucify you or to let you go?" And Jesus says, "You have no power except what is given to you of my Father." And then it says Pilate became afraid. Pilate got a sense that there's something different. This is also with Caesar, when he was born when Jesus was born in Bethlehem. None of us choose where we're born. We're not able to do that because we're not around. As clever as we might be and as able as we may be to manipulate our parents, one time we can't do it is before we're born. That's the time we can't do anything, except Jesus was able to choose where he was born. And he did it through Caesar. It was Caesar that Jesus turned Caesar's heart to have a census, to get everybody to go to Bethlehem, and he went to Bethlehem and was born in Bethlehem. So this child is ruling the Caesar of the whole world. The Caesar of the whole world is deciding to have a census so that Joseph and Mary have to go back to Bethlehem and fulfill the prophecy that says he'd be born in Bethlehem. She was in her last days of her pregnancy, so she would have stayed in Nazareth and not going to take a long journey. But they went to Bethlehem because Caesar insisted he go to Bethlehem. And it was the child in Mary's womb that moved Caesar's heart to make them go to Bethlehem at that time and to do it. So this is the child that has, he is the one that the government should rest upon his shoulder, and the increase of his government and peace will be no end. And from time to time he just gives little glimpses of it. And that's all we get to see, just little bits of it. We also only get to see a little bit of it in our own life by faith and in one another's life, because we see a little glimpse of it and then either 4 weeks and then we just know one another after the flesh and we just say, or else envy blinds us. Our little envy, we see the glory of God and we don't see it. So it says he was a root out of dry ground. He will spring up as a root out of dry ground. A root meant that he was the line of David. David who ruled all of Israel, and Solomon after him in great power. And he was going to be a son of this king. And rather than the kingship being handed to Joseph and Mary, who were the descendants of the king, and effectively Joseph could have been the king of Israel and could have been the king, and then after him Jesus. But it had shrunken down to a root. The whole splendid tree in all its huge magnificence had shrunken down and was in the dry ground. There was no ruled by the Romans and no religious life anymore. The only religious life left was outward religious life. Only just outward religion, decorated religion or ornamental religion of the Pharisees, and it was dry. It says that Jesus came to the fig tree and came to pick fruit of the figs.
of the life of it, and it says all there was leaves, and he did indeed. Meaning all there was leaves. There was only outward religion, but no fruit in it, and there was nothing in those things. So why does he do it? Why is he the child? And it's that God wants the heart, and he wants people who can see behind Bethlehem, behind the Nazarene, behind the village carpenter, behind the son of Joseph, behind the uneducated, uninfluential person. And if people follow a king who comes in splendor, they usually follow him because of there's a kind of a buzz around the king. There's a kind of a flow, and also you may get something. You may get a position. You may get money. You may get influence, and also you won't get trouble for going against the leader of the people. So when Christ, nobody puts pressure. Like if you don't follow Jesus, there's no pressure from the outside. He says, "Follow me." There's no pressure from the outside. So one other reason is that most of the world lives that way. The majority of the world lives a simple life. They don't have influence. They live in a simple way. They are a child that's born. That's all. They're just a child born. Most of the world is that way, and he came as the friend of the world. So just a couple of thoughts. By coming in power, if he came in power, his followers would follow outwardly, and that's all they would see. They'd follow an outward thing, and they never get him. But he's saying, "Unto us a child is born, and a son is given," and he wants people to see that he's wonderful, that he is. I told this story before, but that he is wonderful, that he is powerful, that he is the Prince of Peace. Here's two very unusual stories. One is when Jehu becomes king destroys Ahab, isn't it? And he becomes king. What he does is, as king, he says, "We'll have a Baal worship service." First thing he does, he kills all the enemies. Then he says, "My first act of king, we'll have a Baal worship service." So they all say, the king worships Baal. So he says, "Clear out the temple, we'll have a Baal worship." And he brings in all the Baal worshippers, and he comes in, and then he says, "Make them wear robes, all the worshippers of Baal." So he says, the king is. So they all wear robes. And then Jehu says, "Make sure they're all true worshippers of Baal." And they all said, yes. And then he says, "Go in and kill them all." So he knows, here's a king, Jehu. Jehu knows people will do what the king wants them to do. Worship Baal, I worship Baal. Worship Jehovah, I worship Jehovah. I go with the king. If he's in it, I'm in it. So Jehu knew the nature of men. He knew that they would worship because they never worshipped from the heart. And if he says Jehovah is God, they don't follow Jehovah, but they don't follow Jehovah. They follow Jehu because he's the king. Jesus knows the heart of men. He knows our tendency to go with the outward. So he hides himself. And he gets us to say, you've got to see the heart. You've got to see the wonder. His name is wonderful. You have to see the wonder. The other one is in 1 Thessalonians. Jesus says, very unusual verse, that Satan will come with all counterfeit signs and wonders. So those that don't believe will follow the lie, and they can be condemned. God allows Satan to do counterfeit, and they follow it. And then he said, see, you followed it because there was an outward show of these things, and they followed the lie. And God allowed it. And Jesus is a king, and he knows the nature of people, so he knows the tendency to run after the outward, so he hides himself. So, just last thing, just from Matthew's genealogy, he says, we've read this before, Matthew's genealogy, and it's just showing Jesus really because of, he never, even at the end, he was left as a, he didn't make a display of great royalty even to the end. Even after his death and resurrection, there was still only the believers who followed. There was no outward signs to do it. So Matthew gives the genealogy to show his credentials as the son of Abraham and the son of David. But I'm sure we're familiar with this.
point in it. In verse 3, Matthew 1. And Judas begat Phares of Zerah, of Tamar, and Phares, and then it says verse 5, Boaz, Salmon had the son Boaz from his wife Rahab, and Obed had a son, Boaz had a son of Ruth, and then Solomon was born of David, who had been the wife of Uriah. So he names the four, these four, which is unusual, and it is Rahab, Tamar, Ruth, and Bathsheba. Firstly, it's almost never in all the genealogies and chronicles and all those, it always just mentions the men. Here he mentions these four women. Who he doesn't mention, if we wrote it, we would say, and we had to put a few women in, we would say, and Sarah, Abraham had a son called Isaac of Sarah, this gracious princess of Israel. Not without fault, but very much Rebecca, Rachel. We would put these people in. But Matthew puts these, the Holy Spirit puts these in, and Christ puts these in. He says, these are my descendants. This is where I came from. I came from Rahab. Rahab was a prostitute, and we know it, but let me just say it. Rahab was a prostitute. She lived as a prostitute for years, and the two men came in, and she believed. She says, these men are the men of God. And then she waited for whatever time that they came, and she hid them, let them go away, and whatever timing was, a couple of weeks later, they captured the city, and she waited for them and put the red rope outside, and then she was rescued. And she marries Salmon. Is it Salmon is her Phares? Rahab, where is she? Salmon begot Boaz of Rahab. Boaz, who we know, Boaz and Ruth, but Salmon is the father. And Boaz is a mighty man. Boaz, it says of Ruth that he was a mighty man. So was Solomon, his father. And Solomon is who Rahab, the harlot, prostitute. The next is Tamar. Tamar is Judah's daughter-in-law. Judah has 3 sons, and 2 of them died. And he's supposed to give Tamar to his youngest son so they could bring up children and keep the name of the family. And the father Judah holds it back. He won't do it because he thinks, well, if the 3rd son dies, there's some curse on her, he thinks it is. So he probably know the story. So Judah will not give her. So Tamar says, I am to bring up children from my... This is the Jewish tradition, I'm sure you know. So Judah, after his wife dies, decides that he goes with his friend and says, come on. And his friend says, come on, I'll show you can find a prostitute. Judah! And then as he goes, probably not the first time, because Tamar begins to see a pattern and she goes, I'll dress up as a prostitute. Go to where he goes, and then I'll disguise myself. So she does that, and she has a son by her father-in-law. Judah, and this is the Lion of the tribe of Judah. Right in the book of Revelation, he is the Lion of the tribe of Judah. He is the king of the line of the tribe of Judah. Look what Judah's like. After his wife dies, he's going with prostitutes. And he says, therefore he's not ashamed to call them his brethren. Like, if we were to write a religious book to gain some followers, we talk about Sarah and Rebecca and Rachel, but not Judah. And then he talks about, and rather, it's very easy to leave these out. He deliberately puts them in, and her, who was the wife of David, who was Uriah's wife, Bathsheba. David, who will be he gets called from here on in the son of David. He's the son of David, and he is the David who ruled forever. And David, of course, we know the story with Bathsheba, and then he has Uriah killed, and it's adultery with Bathsheba, and Solomon is born, and it is Solomon who brings the line down. And the last is Ruth. Ruth, of course, a noble person, godly person, but a Gentile, an outsider, and she's brought in.
But these are the ones, it says that he's not ashamed to call them his brethren. That he's not ashamed to call them his brethren. And like the gospel story, unto us a child is born, unto us a son is given. And the child, he's hidden. He's hidden in a simple village. He's hidden in a simple life with uninfluential followers. He is the carpenter's son. And nobody takes him. But he's hidden more than that. And in his life, he was not esteemed. He was not esteemed at all. In John chapter 7, his family say, we think he's beside himself. They think he's not making right decisions. His judgment is wrong. In John chapter 8, some of the commentators say that they mock him. They say, we know who our father is. Our father is Abraham. And some of them say they're referring to the fact that they knew that Mary and Joseph married a little after they did the timing and the calculation, and they mocked that way. But he didn't have a reputation, and he made himself. They called him a wine bibber. They called him Beelzebub, and he's not ashamed to call his brethren. And his life was not. He made himself of no reputation. He took the form of a servant. Made himself, humble himself, not only a man, but a simple man, a man with no influence, a man that you would only follow if you could see the wonder, if you could see he is the child that is born, but he's the son that is given. That you have to see the son that is given. You have to see past his humanity. And also the same with us, that like we see three people. We look at Jesus Christ wrong, we see him in just a good man, and then we see one another this way. We see only the child that is born, and then we see ourselves that way. Especially the part when our life is simple, and we don't have, it's simple, no influence, no real reputation, no name. That's hard. But when your lineage is, my honorable grandmother, Bacchus, was the prostitute Rahab, and she married, and her and my father was Judah. I am the Lion of the tribe of Judah, and he writes it here in the beginning of the Gospels that this is Judah. He doesn't hide it. He's not ashamed to call us brethren. He's the friend of sinners, and he's not ashamed of those people or us. Not ashamed of us, and we're no different in the sense. So just lastly is that, when these things come in Luke's Gospel, he says, the devil challenges him in the wilderness, if you are the Son of God, take these stones and turn them into bread. And the devil challenges him, if you are the Son that's given, to me, you just look like the child that's born. To me, you just look like a carpenter, and you look like a good man and a preacher. But if you are the Son of God, if you have that deity, because Jesus felt it too. He also had to live by faith and being challenged with these things and trying to keep himself with the reputation of that people. So the devil challenges him, and Jesus isn't moved by it. He knows he's the Son of God, and he's not moved by it. And then just the same challenge comes to you. If you are there was a child that's born, the Son that's given, if you are sons of God, if the Holy Spirit dwells in you, prove it. And Jesus is asked to prove it by turn the stones into bread. And then of course by climb up on the temple and jump, and the angels will catch you. Do something spectacular and prove your deity. And then just lastly, when he goes back to his hometown, he's back in Nazareth, and they listen to him, and they hear the gracious words that come out of his mouth, and they say, and they see, what they do is they see the glory. They're able to see it from his words. They hear the gracious words, and they say, this is the Son. They notice it. They're amazed at the gracious words that proceed out of his mouth. They see behind this carpenter from Nazareth
he's the Son of God. And then they say, all of a sudden, their prejudice kicks in and say, no, isn't this Joseph's son? And aren't his brothers and aren't this? And then they get prejudiced against him, and then they go to push him off the cliff. Because, you know, they see it and then they don't see it. So our challenge is just that unto us a child is born in Christ to see it, and that we are not different than our Master. You know, we have a genealogy that isn't as clean as we'd like it to be. We'll write our own genealogy, and we'll leave out the names, and we'll add the names we want to add in, and we'll leave out the names we don't want in there. But we have a if our Master has that genealogy, are we going to write a better one? I'm more righteous than he is. And so he gives us that. We have that Son that's given to us. So we have to, just as we close, we see the wonder. If we see the Son that is given in ourselves and one another, and his child is born, his Son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, the Everlasting Father. Because if you can see the wonder, if you can see past just the mundane and this thing, and you see the wonder, then you'll have the counsel. And if we don't see the wonder, we'll just have our own counsel and our own wisdom, the wisdom that's from below, that's earthly. But if we see past, we get the counsel. We'll see his name is wonderful. We'll see his counselor, a counselor of heaven, and we'll see his mighty God. So, Father, thank you for Lord, thank you, God, that you came. Thank you, Lord, for these things. Thank you for the gift that you have given us, Lord. For you've given us a gift, Father, unspeakable and full of glory. We thank you for it, Lord, that this gift is given to us. We praise you, pray we would treasure it. We ask